Salam everyone, welcome to Physics with Noshir Alam, and we are discussing EMF and internal resistance. Now, when you talk of EMF relates to a cell. Let's say you take a cell. Every cell has a very small internal resistance. This is the structure of the cell. Okay, so the dotted line represents the casing. केसिंग के बाहर टर्मिनल्स होते हैं जिनको आप कनेक्ट कर देते हैं विथ योर सर्किट. So you never touch this part or this part. This is inside the cell. So remember, this is the boundary of the cell. जब आप सेल पकड़ते हैं AA या AAA बैटरी, so the part that you're holding is this part. This is inside the cell. So the internal resistance is within the cell. Now, let's say this battery has 5 volts printed on it. Okay, what you do is you connect a voltmeter in parallel to the cell just to check what is the voltage of the cell, and lo and behold, the voltage turns out to be 5 volts. You have connected a high resistance voltmeter. Remember, voltmeters always have a very high resistance. Ammeters have very low resistance. Now what do? Now what you do is you take the same cell, the 5 volt cell. It has the same internal resistance. This is the casing. ये पार्ट ये आपको सेल का यूं नज़र आता है और यहाँ पे वो नेगेटिव होता है. So this is positive and this is negative. And now we connect a resistor in the circuit. Alright, and the voltmeter is still connected in parallel with the cell, just the way it was earlier. वैसा को पता है पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है. It doesn't matter whether the voltmeter is connected here or whether the voltmeter is connected here. The reading has to be the same. So both voltmeters should show the same reading. The question is that when you connect this resistor, this voltmeter reading is no longer 5 volts. The voltmeter reading is less than 5 volts. Why? Maybe because there's a current. So, what if there's a current? Why is the voltage dropping? This concept has to be scratched. And now let me explain. So this external resistor, as I call it, is capital R. The internal resistance is small r. And now, for all argument's sake, I'm not going to take this as 5 volt. I'll drop this and I'm going to take this as EMF E of the cell. So EMF E, internal resistance, capital R, and current. The first thing is, how do you find the current in this circuit? The current in the circuit would be found out by capital E divided by small r plus capital R. I've used the equation V is equals to IR. And I've explained in my previous lectures, जब EMF डालते हैं तो I total, R total होता है. Now, small r and capital R, they seem to be in series, don't they? Because the current is not splitting. So, the total resistance will be R plus R and you'll get the current. But still does not explain why the voltmeter reading is less than 5 volts. Well, I gave you a hint that in this circuit, there was no current. So, the current was 0 over here. But over here, the current is present and it has a value. Well, let's see. So EMF would be equal to I into small r plus I into capital R if I cross multiply. This IR is what? This is the
potential drop across the internal resistance. So जब ये करंट इस आर में से गुजरा तो एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वो आपको ये नज़र आ रहा है. So this is the potential drop in the external resistor. फिर ये करंट इस आर में से गुजरा, जब इस आर में से गुजरा तो फिर एनर्जी ड्रॉप हुआ, एनर्जी लॉस हुआ. बिकॉज बिल्कुल सीरीज़ में जिस तरह आप करते हैं कि दो रेजिस्टर्स लगाएं, एक पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, दूसरे पे वोल्टेज ड्रॉप होता है. तो इधर भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इधर भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ. यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज़ दिस पार्ट, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज़ दिस पार्ट. ओके, नाउ मुझे ये बताएं ये वोल्ट मीटर किधर कनेक्टेड है. दिस इज आउटसाइड द केसिंग ऑफ द सेल, राइट? So within the casing of the cell, you have this EMF and you have this internal resistance. So when this current flew across the circuit and passed through this internal resistance, तो इधर एनर्जी ड्रॉप हुआ. अब जो बाहर टर्मिनल्स पे एनर्जी मिलेगी आपको, वो ज़्यादा होगी या कम होगी? ये प्रिंटेड एनर्जी है 5 वोल्ट्स, बट ये करंट जब गुजरा तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रॉप हुआ. इसका मतलब है जो बाहर टर्मिनल्स पे आपको एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी? वो कम होगी. वो कितनी होगी? आप इस एनर्जी जो प्रिंटेड एनर्जी है 5 वोल्ट्स, उसमें से ये वाला एनर्जी ड्रॉप निकाल दें, जितने ही वोल्ट्स द ड्रॉप हो वो निकाल दें, वो आपको मिल जाएगा वोल्ट मीटर पे. एंड दैट इज़ वाई द वोल्ट मीटर रीडिंग वाज लेस देन 5 वोल्ट्स, बिकॉज 5 वोल्ट्स वाज द प्रिंटेड एनर्जी, द EMF. But when the current went through this internal resistance, some volts got dropped over here, because whenever current will flow through a resistor, there will be some voltage drop. So as a result, what happened? That the voltmeter reading was not showing you 5 anymore. अब इधर 5 क्यों दिखा रहा था? आपको समझ आ जाएगी, इधर करंट ही नहीं था. सो करंट ही नहीं था तो इस इधर कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ नहीं. आपने वोल्टमीटर इधर ही कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे. सो वो वोल्टमीटर 5 वोल्ट ही दिखा रहा है. लेकिन अगर यहाँ पे करंट आ जाता तो इस रेजिस्टेंस में से गुजरने की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता, तो बाहर आपको सेल के टर्मिनल्स के ऊपर जो वोल्टेज मिलता वो कम होता. सो रिमेंबर वन थिंग, दैट दिस वोल्टेज, द वोल्टेज दैट इज अक्रॉस द टर्मिनल्स, जी जो आपके 2 वोल्ट मीटर रीडिंग्स हैं, इनको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? VT is also known as the terminal potential difference. So IR जो कैपिटल R वाला है, इसको हम terminal potential difference भी कह सकते हैं. Why? Because capital R is connected across the terminals of the battery. It's not connected inside the battery. It's connected at the terminals of anything you connect is always at the terminals of the battery. It's common sense. Remote के अंदर सेल डालते हैं तो सेल के टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं रिमोट की स्प्रिंग के साथ, वो जो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव. सो इट्स एनीथिंग दैट यू कनेक्ट इज ऑलवेज आउटसाइड द सेल. So it's always connected at the terminals of the battery. So anything which is connected at the terminals will always get the terminal potential difference. So remember this, that I times capital R will be called as terminal potential difference. I times small r will be the potential drop across the internal resistance, and EMF is this EMF. So let me write down the equation in a different way. E is equals to IR plus VT. So you can get so many equations out of here. You could get VT is equals to E minus IR. That's 1 if you want to find out the terminal potential difference. Or you could even make small r the subject of the equation, because in questions they can ask you to find out the internal resistance. So internal resistance क्या होगी? EMF में से अपना terminal potential difference minus करें और current पे divide कर दें. That will lead you to the internal resistance value. Let me explain on the picture. So let's say 5 volts इधर लिखा हुआ था. आपने जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, टर्मिनल जब मेजर किया तो वो आ गया 4.5 वोल्ट्स. सही है. सो लेट मी राइट दिस डाउन. आपने जो सेल के ऊपर पड़ा वो 5 वोल्ट्स था. आपने जब वोल्ट मीटर लगाया तो वहाँ पर आ रहा है 4.5 वोल्ट्स.
मतलब वोल्ट मीटर यहाँ पे टर्मिनल्स पे लगाया. जब भी वोल्ट मीटर लगाएंगे टर्मिनल्स पे लगाएंगे, बार बार बोलने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए. Now when you measure this voltage 4.5 and the EMF is 5, your question should be, why is it not giving me 5? Why is it giving me 4.5? The answer is 0.5 volts got dropped over here. So what is the potential drop in the internal resistance? That is 0.5 volts. All right. Then what if I give you the amount of current that was going in? So I say that the current that was going in was, for example, 0.1 ampere, just as an example. Okay. So if the current is 0.1 ampere इधर, तो इधर भी 0.1 होगा, इधर भी 0.1 होगा, इधर भी, because सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहेगा. तो इसमें से करंट कितना गुजरा? 0.1. Now I want to find the value of the internal resistance. So you use V is equals to IR. The potential drop in the internal resistance is 0.5, so you write 0.5 over here. The current is 0.1 into R, and the value of R would then be 5 ohms, for example. Okay, so this is the way of solving. Now I was saying you could use this formula. So did I give you the EMF? Yes. Did I give you the terminal potential difference? Yes. So what is 5 minus 4.5? यहाँ पे डालो, divide करो by current. Current कितना? 0.1. So 5 minus 4.5, 0.5 divided by 0.1, and you get the same answer. So this is just a shorter way. Over here, what I've done is I've just explained how this formula works. So this is the concept of the internal resistance. Now there's one more thing that you need to know. If the value of R is increased, whenever I say capital R, what do I mean? Internal or external? External. If the value of capital R is increased, tell me something. Will the current increase or decrease? The current will decrease. The current in the circuit will decrease. My question to you is, what will happen to the terminal potential difference? Will it increase or decrease? Think please. Pause the video and think. So मैंने R की वैल्यू बढ़ाई है, उससे मैंने आपको एक हिंट दे दिया, करंट कम हुआ है. आपने मुझे ये बताना है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, R की वैल्यू बढ़ाने से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा? The answer to this is that the terminal potential difference is E minus IR when you are decreasing the amount of current. ये current है यहाँ पे. जब आप इस current को कम करेंगे तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो terminal potential difference increase करेगा. Remember this. So if R is increased, the terminal potential difference also increases with it. Do not forget this. It's a very important point, and a lot of people mess it up because they don't understand it. Now, a couple of things to further enhance our understanding. You know, you've studied cell combinations, so you know that cells can be arranged in series and cells can be arranged in parallel. If cells are arranged in series, let's say this cell has EMF E1, this has EMF E2, and this has EMF E3, internal resistance R1, internal resistance R2, internal resistance R3. And I ask you, what is the total EMF? So you'll say all cells are supporting each other, so EMF will be E1 plus E2 plus E3. If I ask you, what is the internal resistance? You'll say total internal resistance would be R1 plus R2 plus R3, right? What if I arrange the cells in a slightly different way, like this? So this is E1, this is E2, and this is E3. R1, R2, R3. Now what will your total EMF be? It will be E1
माइनस E2, क्योंकि E2 आपने उल्टा लगाया है और E3 आपने सीधा लगाया था, तो प्लस E3. एंड व्हाट अबाउट द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस, याद रखें, रेजिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम नहीं हो सकती सर्किट में. वो करंट जब इस सर्किट में फ्लो करेगा तो वो इन तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो करता हुआ जाएगा और तीनों की वजह से एक एनर्जी ड्रॉप आएगा. सो एनर्जी ड्रॉप कम नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता कि सेल उल्टा लगाए पता चले कि एनर्जी ड्रॉप ही कम हो गया. दैट्स नॉट पॉसिबल unless the cells are not working at all, but I'm assuming that the cells are working. So remember, for cells in series, if they're all arranged in the same EMF is given by this, but if they're arranged in a different way, this, but the internal resistance will continue to increase. And then for cells in parallel, if you've arranged cells in parallel, well, you know, in parallel the voltage remains the same. So this is E, this is E, and this is also E, and this is R1, this is R2, this is R3. R1, R2, R3 are the internal resistances of the cells. Now ज़रूरी नहीं कि बार बार वो डब्बा साइड पे अलग से बनाए, आपको इसको भी देख के पता चल जाना चाहिए. So the total EMF would be E, right? But what about the total internal resistance? Total internal resistance will be found out by 1 over R total is equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. There's a question which should rise in some of your minds. कि यहाँ पर तो हमने बड़े आराम से ज्यूम कर लिया कि तीनों सेल्स की वैल्यूज ही डिफरेंट है. यहाँ पे हमने ज्यूम कर दिया सेल्स की वैल्यूज सेम है. अगर पैरेलल में सेल्स की वैल्यूज डिफरेंट होती तो हम क्या टोटल EMF लिखते? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए. लेट्स से ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, फिर क्या लिखते हैं? पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहना चाहिए. अब मैं अगर ये 6 है, मैं दो सेल्स की एग्जांपल है, ये 6 है, ये 4 है, मैं टोटल EMF क्या लिखूँ? 6 लिखूँ, 4 लिखूँ, एवरेज लिखूँ, क्या लिखूँ? एवरेज भी लिखूँगा गलत है, 6 भी लिखूँगा गलत है, 4 भी लिखूँगा गलत है. सो लेट्स सॉल्व दैट. एंड टू सॉल्व दैट, let me pull up a question. Your question is that you have a 6-volt cell with an internal resistance of 2 ohms. Okay. I connected with another cell of 4 volts with an internal resistance of 8 ohms. I connect them like this. बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ पे connected है. दो cells की example लेते हैं. Now, I will connect my voltmeter over here. So this is my voltmeter. Question is, what's the voltmeter reading? Is the voltmeter reading 6 or is it 4? That's the question. अब आप voltmeter को यहाँ से connect करें, इधर से connect करें या इधर से connect करें, ये सब parallel में है तो same रहेगा. The voltmeter is connected in parallel with these two. Voltmeters, yaad rakho, have infinite resistance, like I told you. So the current will flow out from the 6-volt cell. It'll reach this point but cannot go here. So there's no point of splitting. So 6 volts वाले सेल से करंट निकला, 4 volts में से एंटर किया और वापस आ गया. Now, this is the direction of current. First of all, can you tell me what the current is? The volt is equals to IR. So since I have two sources and they're opposing each other, so do I add them or subtract them? I subtract them. So I do 6 minus 4 is equals to current. And what's the total resistance it went through? 8 plus 2, 10. So the current is going to be 0.2 amperes. I hope you're with me. Now, once you get the current as 0.2 amperes, the next stage is, now once you have the current, the next question should be, what's the voltage? Is it 6 or is it 4? Is it something else? My idea is, it won't be 6, it won't be 4, it would be somewhere in the middle. देखो, current यहाँ से निकला है. So this battery is discharging. Alright, remember,
ये जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है, द बैटरी इज डिस्चार्जिंग. नाउ if the battery is discharging and I want to find out the terminal potential difference, the equation is E minus IR like we derived earlier. So I want to find out what the terminal potential difference is because I told you where's the voltmeter connected? Always at the terminals. So I'm solving for the 6 volt cell. So 6 volt cell के लिए हम यहाँ पे solve कर रहे हैं. So the EMF or the printed voltage is 6 volts minus the current was 0.2 and the internal resistance was 2. So 6 minus 0.4 and your answer is 5.6 volts. So from this cell, apparently it seems that this voltmeter reading should be 5.6 volts. But if you apply the same equation over here, you get the wrong answer. If you do Vt is equals to E minus IR, because ये तो हमने derive किया पीछे. For this cell, the printed EMF is 4, the current is 0.2 and the resistance is 8. You end up getting 4 minus 1.6, I think it's 2.4 volts. And parallel, we thought that the voltage would be the same. That's what you've learned. But how can, अब मैं क्या लिखूँ 2.4 लिखूँ या 5.6 लिखूँ? ये वोल्ट मीटर इसके भी टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है, ये वोल्ट मीटर इसके भी टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है. ये तो नहीं हो सकता वोल्ट मीटर एक ही टाइम पे 2 रीडिंग दिखाए, एक रीडिंग दिखाएगा. So obviously either this is wrong or this is wrong. I told you something, if you remember. This cell is discharging because the current is leaving the positive terminal. So when you discharge, your terminal potential difference decreases, so E minus IR. EMF minus IR whenever the cell is discharging. But what about this cell? Is the current leaving or entering the positive terminal? The answer is the current is entering the positive terminal. So जो बैटरी चार्जर होता है वो बैटरी को कभी सोचा चार्ज कैसे करता है? आपके फ़ोन में बैटरी लगी है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी चार्जर लगाते हैं, बैटरी चार्ज होती है. क्या फ़र्क होता है? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है. जब बैटरी चार्ज होती है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है. सो द बैटरी चार्जर वर्क्स बिकॉज इट मेक्स द करंट एंटर द बैटरी. It doesn't let the current come out. So the current enters this battery. Now tell me something. The current is entering. Is this battery charging or discharging? Obviously the answer is charging. Now in charging, does your voltage decrease or increase? In charging, common sense, increase. So should this equation be E minus IR or E plus IR? ये याद रखो ये वोल्ट मीटर टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है. ये प्रिंटेड है इसके ऊपर 4, लेकिन करंट इस बैटरी के अंदर जा रहा है तो आपके टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज है वो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए. ये बैटरी चार्ज हो रही है, 4 तो लिखा हुआ है, बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी फट जाएगी चार्ज हो के. तो क्यों फटेगी? क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा होगा, वो वोल्ट मीटर दिखाएगा. सो रिमेंबर व्हेनेवर द करंट एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स द बैटरी इज चार्जिंग. Battery is charging, then that means it should be E plus IR, and if it's E plus IR, then I should do a 4 plus 0.2 into 1.8, and when I do a 4 plus 0.2 into 8, I get 4 plus 1.6, which is 5.6 volts. Voila. So 5.6 volts, you get the same reading. So our concept remains intact कि सेल्स को कभी पैरेलल में लगाया जाएगा इस कन्फिगरेशन में. इस तरह 2 डिफरेंट सेल्स भी होंगे तो पैरेलल में वोल्टेज विल रिमेन द सेम. मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर की जगह एक रेजिस्टर लगा देता तो यहाँ पे 6 होता, यहाँ 4 होता, तो ये ना होता कि इसको या 6 मिलेगा या 4 मिलेगा. इसको दोनों के दरमियान में एक वैल्यू मिलेगी विच इज़ अराउंड 5.6 फॉर एग्जाम्पल, एंड दैट विल बी द सेम. So remember, in parallel, the voltage remains the same whether the cells are similar or not. All right? Perfect.